हेलो एवरीबॉडी, हाउस इट गोइंग। आज हम फिर आए हैं कॉफी विद करण रिव्यू करने के लिए। देखते ही देखते हम 10th एपिसोड तक आ गए हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी एपिसोड्स आर इन दिस सीजन, लेकिन करण के जैसे आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, दिस एपिसोड हैड अ मदर एंड सन डुओ, जो कि करण ने कहा है इन द हिस्ट्री ऑफ कॉफी विद करण कभी नहीं हुआ था। बट today's guests took care of that, and they were none other than Saif Ali Khan and Sharmila Tagore. करण जौहर ने काफी अच्छी तरह से इन दोनों का इंट्रोडक्शन किया था। फॉर शर्मिला टैगोर, Karan Johar said that she was path breaking on and off screen. And जहां तक सैफ अली खान की बात है, he called him multi-talented and multifaceted and someone who has reinvented himself. Aside from these words, I also have some of my own. सैफ अली खान को देखते एक ही वर्ड आता है मेरे दिमाग में, and that is suave. I mean, look at him. Black suit with those blue shades. Suave नहीं कहोगे तो क्या कहोगे इसको? Good looking? Okay, I agree. Very good looking. Oh, and here's another one. Charming. And जहां तक शर्मिला की बात है, अगर उनका बेटा suave and charming है, then she is the epitome of elegance. That sari, her look, pure beauty. And I think the whole world knows कि सैफ अली खान takes after his mother, मतलब similarities हैं features में, and इन दोनों को साथ साथ देख के I kept thinking, wow, does he look like his mother? मुझे नहीं पता मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी इस एपिसोड में, लेकिन एक बात बता देती हूँ what I wasn't expecting, and that is how talkative Sharmila is. मैंने उनकी पहले भी इंटरव्यूज देखी हुई हैं, लेकिन वो सोलो इंटरव्यूज थी जहां पे वो खुद बातें कर रही थी। जो करीना कपूर खान का टॉक शो है, वहां पे शर्मिला आई थी, so she was talking back and forth. यहाँ पे the amount Sharmila had to share, the amount of interrupting she was doing of Saif Ali Khan, I thought that was really funny. Saif Ali Khan ने तो ये भी कहा था कि मुझे अपना सोलो एपिसोड चाहिए, यहाँ पे कोई बात नहीं करने दे रहा मुझको, so that was really fun. And just this mother duo bond जो back and forth इनका चल रहा था, बात बात पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, बात बात पे एक दूसरे को देखते थे. I think there was a lot of love and appreciation दोनों sides पे. Not only was this the first mother-son duo Coffee with Karan पे, but सैफ ने ये भी कहा था कि before this इन्होंने screen time भी share नहीं किया एक दूसरे के साथ, कभी इंटरव्यू नहीं की एक दूसरे के साथ. So I think it was the first of a lot of things, and यहाँ पे एक running theme जो रहा है इस season का, family relationships, family dynamics, family history, उन सब के ऊपर इन दोनों ने बात की है. From Saif's current marriage and relationship, Kareena Kapoor Khan के साथ, and previous marriage and relationship with Amrita Singh. मुझे नहीं पता था कि इतना उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आई लव्ड शर्मिला ने कैसे एड्रेस किया इस पूरी बात को, क्योंकि करण ने पूछा था हाउ डिड यू फील अबाउट द वेडिंग, ये वेडिंग बहुत अचानक हुई थी, आप क्या सोचते थे अमृता के बारे में, क्या सोचते थे सैफ के डिसीजन के बारे में. एंड यहाँ पे शर्मिला ने कहा था कि अमृता एंड सैफ वर वेरी सिमिलर, दोनों ह्यूमरस थे, दोनों विडी थे, दोनों एक दूसरे को बहुत हंसाते थे, लोगों के ऊपर जोक्स क्रैक करते थे. There was a lot going for them. लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि it came as a shock. उनको पता नहीं था कि शादी हुई है इन दोनों की. So she was taken aback, she was quiet, process किया. ड्रामा नहीं हुआ फैमिली में, लेकिन बहुत silences थे. But then the very next day, आमना सामना हुआ Sharmila Tagore and Amrita Singh का, and they got along famously. I really like कि सैफ ने कहा कि यहाँ mom is being surface level about it. Mom was hurt, she shed a tear, and I felt bad for hurting her. See, one thing जब आप शर्मिला टैगोर के बारे में सोचते हो ना, the word that comes to mind is progressive, modern. इनकी खुद की marriage बहुत progressive थी for the day and age, and then obviously Seth's marriage to a woman older than him at such a young age, then his divorce, then his remarriage, सब public platform में हुआ है. तो यहाँ पे शर्मिला ने कहा है कि they had a great bond, लेकिन when the separation was happening, Seth and अमृता के लिए difficult था, बच्चों के लिए था, हमारे लिए भी उतना ही था. We were losing Amrita and the children.
एंड यहाँ पे जब शर्मिला टाइगर पतौड़ी का नाम ले रही थी और कह रही थी कि ही वाज रियली फॉन्ड ऑफ इब्राहिम, अब इब्राहिम बहुत छोटा था एंड ही वाज फीलिंग बैड दैट दे वुडंट स्पेंड दैट मच टाइम विद हिम। सैफ की शक्ल देखने लायक थी, ही वाज रियली प्रोसेसिंग इट एंड आई जस्ट लव दैट अबाउट सैफ कि वो बातें सुनता है, समझता है, फील करता है, ही इज वेरी मच एंगेज्ड इन द कॉन्वर्सेशन, चाहे वो frivolous and fun conversation ho, chahe wo poignant and emotional conversation ho. He's always present. And then obviously Karan always asks people about their family dynamic. And yahan pe Saif ne reiterate kiya tha ki Kareena has stepped up, but so have the kids. And so has Amrita. Ye sab coexist karte hain, appreciate karte hain, and interact karte hain ek dusre ke sath. They are a modern family and they don't hang on to the obstacles of the past. See, Saif Ali Khan charming है, intelligent भी है. He has a lot of hobbies outside of acting. हमने हमेशा सुना है कि he's a voracious reader. He loves instruments, playing the guitar, cooking, traveling, history. लेकिन उसके साथ साथ you can tell कि Saif is mischievous. आई डोंट नो कि उसकी आंखों में है कुछ या उसकी स्माइल में है, लेकिन कुछ ना कुछ बात है उसमें जहां पे लगता है ओके बट देयर इज अनदर साइड टू यू। एंड यहाँ पे बिकॉज हिज मॉम वाज इन टो, शी टोल्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट सैफ एज अ चाइल्ड, rambunctious, impulsive, rebellious. आई रियली लाइक कि सैफ का था यहाँ पे एक पोल खोलने आए हो, यहाँ पे एक के बाद एक एम्बेरसिंग स्टोरी बताने आए हो मेरे लिए, एंड करण वाज फुल ऑन एंजॉयिंग, ही वाज एंजॉयिंग एज वेल। द मोस्ट फनी स्टोरी वाज कि शर्मिला ने कहा कि हमने सोचा कि यूनिवर्सिटी भेजते हैं इसको डबलिन में, इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वहां पे उसका एडमिशन भी हो गया, लेकिन ऑन द वे देयर ही मेट अ एयर होस्टेस एंड यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की, लेकिन एयर होस्टेस के साथ कुछ हफ्ते गुजारने चला गया, सो दैट वाज फन एंड सैफ गोस नो 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 नो, it was there was the air hostess, there was a few weeks but they didn't add up together, he was playing, he was protesting, that was fun। एक स्टोरी उन्होंने बताई जहां पे पदौदी मैंशन, Padodi mansion ही कहोगे ना उसको, it is a mansion, okay, so in their Padodi house, he was running and he ran through a glass like door glass wall and वहां पे सब इर्द गिर्द उसके glass shatter हो रहा था, and Sharmila was like oh my god my kid is gonna get hurt, लेकिन thankfully he wasn't injured। लेकिन फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया जहां पे Saif was playing with a bow and arrow अपने cousins के साथ and वहां पे एक arrow उनके cornea को hit किया। That is insane, can you imagine कि आप अपने बच्चे को देख रहे हो, बच्चा खेल रहा है and next thing you know एक arrow struck him in the eye, that would be insane। Thankfully, इतना डैमेज नहीं हुआ है उसका आई, लेकिन सैफ ने ये कहा कि a lot of people thought कि I was trying to copy my father क्योंकि टाइगर पटोरी had an eye that he couldn't see through, तो लोगों को लगा कि सैफ उनकी कॉपी कर रहा है यहाँ पे। Another running theme इस सीजन में है career, career कहाँ से शुरू हुआ, ग्राफ कहाँ तक पहुंचा है, एंड यहाँ पे करण ने बताया था जो पहली मूवी सैफ की होने वाली थी that was with काजोल in a movie called खुद ही, लेकिन क्योंकि सैफ punctual नहीं था, committed नहीं था, he got dropped from the film, offers were drying up until यश चोपड़ा सैफ के पास जाते हैं, उनको वो पूछते हैं कि look are you ready for this, are you gonna be a good boy, and Saif is like yes yes I'll be a good boy, and then the offer started coming and then he had Parampara come out and then एक hit film काजोल के साथ ही ये दिल लगी। Saif has always been like my favorite Khan. I really like Saif. मुझे उसकी look बहुत अच्छी लगती थी, उसका demeanor, personality बहुत अच्छी लगी है। I loved him in his Salam Namaste days and Dil Jata Hai days and Kal Ho Na Ho days and Hum Tum days। Just like the fun, the naughty, the lover boy types, मुझे बहुत अच्छा लगा है। And then Omkara जब उसने किया, I really liked him, and maybe मैं minority में हूँ, लेकिन एक chef movie उसने की थी, मुझे वो भी अच्छी लगी थी उसकी। And ये जो current content ये दे रहा है, I am a big fan of it, especially like Sacred Games। I think सैफ ने अपने आप को reinvent किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है। Even in a movie like आदि पुरुष, जहाँ पे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, तुक नहीं बन रहा था मूवी का, Saif, in my opinion, was still the better part of the whole movie। तो what I'm trying to say is कि जहां तक एक्टर्स की बात होती है, एक्ट्रेसेस की बात होती है, they get stuck in a genre।
Saif has broken the mold time and time again, and that is a good thing. Superstardom, I don't know Saif has ever experienced, लेकिन star तो ये था और है. लेकिन unlike the star, ये private है, social media पे नहीं है, इसकी life Bollywood के इर्द गिर्द नहीं घूमती, इसके friends भी industry से नहीं है. He does his own thing, and I very much appreciate it क्योंकि single dimensional इंसान किसको पसंद होंगे. One of the highlights in the show was जब AV दिखाई गई थी to Saif and Sharmila of some of the more important women in their lives. यहाँ पे Soha Ali Khan थी, Sara Ali Khan थी, and Kareena Kapoor Khan थी. They were talking about both Saif and Sharmila, obviously. And यहाँ पे AV की बात करने से पहले, I do want to say I really like Sharmila ने Kareena के बारे में क्या-क्या कहा था कि ये like Kareena is direct, communicate करती है, and the Kapoors are known to keep a good table. She has a great table. मतलब खाना पीना, it's really good with her. And she also talked about कि जब Tiger Patodi was ill, passed away, वहाँ पे Kareena थी. And I really like कि शर्मिला ने ये बात की कि generations कैसे change हुए हैं, society कैसे change हुई है. She said, I would have never admitted to anyone that I was living with Tiger outside of marriage. चाहे लोगों को पता हो ना हो, I would have never confirmed it. And यहाँ पे Kareena just so casually was like, yeah, when Seth woke up, blah, 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 blah. Meaning कि they were living together, right? And no marriage on the cards as of yet. यहाँ पे कोई judgment नहीं दिख रही थी, यहाँ पे कुछ condescending नहीं दिख रहा था. She was just stating a fact कि दुनिया change हो गई है, and she appreciated that about Kareena कि Kareena जो भी है upfront है. And also the funny thing is कि हर माँ बाप कहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों ही प्यारे होते हैं. I can't choose between my kids. लेकिन Soha Ali Khan told Karan कि there's something between the mother and son. They have this bond कि no one can touch it. And यहाँ पे शर्मिला ने कहा पुत्र मोह. पुत्र मोह. I don't even know if I can say it. मोह. मोह. मुझे नहीं पता. Like you get what I'm saying. पुत्र MOH. Okay. तो यहाँ पे मुझे तो समझ आ गया. Okay. I knew she was talking about love or bond with her son, right? And यहाँ पे Karan and Saif were like, Putra, what? What? What is she saying? Moh? What is moh? It was so funny. Putra, putra, huh? What is putra? And she was like, oh my God, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? She goes, attachment, attachment with my son. And they were like, oh, अच्छा. Quickly moving on. So, AV में सारा ने अपने दादी के लिए बात की है basically कि her दादी is modern in traditional attire. दादी के लिए जो limerick लिखी है वो भी बताया है. Her दादी's support to her, love for her, appreciation of her, ये बातें की. And जहाँ तक अपने father की बातें की हैं, she said that Saif is her friend, philosopher, guide. एक अच्छा bond share करते हैं दोनों. And she said कि Saif has a unique and important bond with each of his children, which is different. Soha basically reiterated all our fears as we get older कि oh my god मैं अपनी mom बन गई हूँ, oh my god मैं अपना dad बन गया हूँ. And यहाँ पे सोहा यही कह रही थी कि I feel like I'm my mother, I say my mother's words, So that was fun. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप कुछ चीजें शर्मिला के बारे में नहीं जानते, that's because she doesn't want you to know. So basically Sharmila is in control of her life, of her narrative, of her personal and professional life. And then obviously Kareena spoke about her mother-in-law and her husband. She said Saif is her world, her universe. जब भी वो Saif के बारे में बात करती है, सोचती है, her eyes light up, a smile comes on her face. That's really sweet. And she said कि जहाँ पे she fell hard for Saif was कि लद्दाख में shooting करने गए थे, and there was this guy sitting on top of a vanity van, without a shirt on, and he's just sitting there and taking the sun in. And जब किसी ने बताया कि वो Saif बैठा है, she's like, what? That's Saif? And देखते देखते फिदा होगी बंदी. And then अपनी mother-in-law के लिए कहा है कि, Sharmila treats her as a daughter, caring है, loving है, and amazing to be with. जैसे करण हमेशा कहता है कि he has been in love with the classics, मतलब हिंदी classics, movies and songs, क्योंकि उनके parents ने उनको expose किया है. In America, we didn't have access to
इंडियन मूवीज एंड म्यूजिक, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की थी दैट वी गेट एक्सपोज टू दिस, तो वो ड्राइव कर करके न्यूयॉर्क जाते थे फ्रॉम मैरीलैंड, फ्रॉम डीसी, टू गेट द cassettes, टू गेट द वीडियोस जो उनको चाहिए थी कि उनके बच्चे देखें. So I have grown up seeing a lot of Sharmila, Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan, Dharminder movies, because ये इनके फैंस थे तो उनको लगा कि हमें देखना चाहिए. तो यहाँ पे मुझे इतना याद है when I was a kid कि शर्मिला टैगोर के क्या गाने थे. Like, and she was so beautiful, the feline flick of the eyes, the eyeliner, the मोटी मोटी आंखें, the big hair, she was just beautiful. And यहाँ पे करण जौहर ने ये भी कहा है कि आज तक शर्मिला टैगोर का रेफरेंस होता है when it comes to fashion. So I really believe that. And then also जिस तरह की movies की थी शर्मिला ने, I think they were really progressive for her time, but not just progressive, she was not a prop. Sharmila did her own thing. She paved her own way. जैसे शर्मिला ने कहा, मैंने कभी किसी से परमिशन नहीं मांगी है. जो मुझे चाहिए था मैंने किया है, जैसे काम करना था मैंने किया है. उन्होंने ये भी एड्रेस किया कि जब बिकिनी स्प्रेड आया था उनका फिल्म फेयर मैगजीन है back in the 60s, there was a hue and cry, and उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतना विद्रोह क्यों, itni negativity kyun, because she didn't think she did anything bad. She said, I thought I looked really lovely. I just think ki Sharmila was confident, and she knew where she stood, she knew what she wanted, and she was a go-getter from the beginning. And उन्होंने ये भी कहा है कि वो कभी chaperoned नहीं थी. एंड ये बात आज के ज़माने में यूनिक नहीं लगती, क्योंकि यहाँ आजकल हर एक इंसान खुद के लिए करता है, खुद ही अपनी चीज़ें सँभालता है. लेकिन the time frame Sharmila came from, grew up in, was very different. And लोगों को वो हज़म भी नहीं होता था कि how is she so, confident. And the really nice thing she said was कि यहाँ पे जितनी controversies होती थी, they didn't phase her. करण जौहर ने यह भी खुलासा किया कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शर्मिला टैगोर was the first choice for Shabana Azmi's character. And guys, this makes sense because Sharmila is Bengali, and वहां पे Bengali mother ही portray करना था उसको. I think that would have been really good to see. लेकिन उन्होंने ये बताया कि वहां पे COVID का टाइम चल रहा था, she hadn't been vaccinated, she was battling cancer at the time, so she couldn't do it. लेकिन जब करण ने अप्रोच किया कॉफी विद करण के लिए, she couldn't say no. And also यहाँ गुलमोहर की भी बात हुई है, शर्मिला's latest acting role. And वहां पे भी करण ने पूछा उसको कि how easy or difficult was it for you to come and play a queer character. And शर्मिला ने कहा कि ऐसा कोई hesitation नहीं था, because आज के ज़माने में बहुत normalized हो गया है सब, and it's not like she was doing something that would have caused people to have a hue and cry over it. एंड जहां तक सैफ की बात है, इट्स रियली कूल, ओवर ऑल ऑफ दिस सीजन सैफ बहुत से डिफरेंट लोगों के साथ आया है इस शो पे. इस सीजन में अपनी मॉम के साथ आया है. आई थिंक पिछले सीजन में अपनी डॉटर के साथ आया था. एंड एक सीजन में तो वो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड में आया था जो आज तक बातें होती हैं उसको लेके. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंगना रनावत एपिसोड, जहाँ पे he was with her when she made those nepotism remarks. And मुझे याद है सैफ का चेहरा जब उसने ये सब कहा था. So what I'm trying to say is Seth has been on this show through, ups and downs and highs and lows with so many different people, and it's really nice to see him every single time. And Kaska rapid fire round, maybe, Seth doesn't disappoint. लेकिन यहाँ पे Seth हार जाता है अपनी mom से. And I have to say, I think कि शर्मिला टैगोर को जो questions मिले थे वो बहुत अच्छे थे. They were interesting. Seth ने भी कहा था, man, these are some good questions. उसके टाइम पे इतने interesting questions नहीं थे. Seth made some cheeky remarks, some naughty statements here, slippery when wet, and what? Kareena rubbed off on me? And then he said, okay, patience, time management, routine. So that was fun. Favorite co-stars की बात करें, for some reason मुझे पता था कि इसने रानी and प्रीति का नाम लेना है, तो उनका नाम लिया. He also said Kajol, and he said Deepika as well. जब Karan ने पूछा, what would you say if, a woman approached your son? And he said, if she approaches the younger ones, I'll get her arrested. For the older son, he goes, कि
कोई सुनता तो है नहीं मेरी, so my only criteria is कि उसको single होना पड़ेगा. He doesn't want her to come with any attachments. Misconceptions की बात करो तो basically Saif was saying people think I'm crazy rich. I don't know how many rooms they think the Patodi house has, and then he has a chalet in France somewhere. I don't know if they're misconceptions. जब करण ने पूछा कि फैमिली फाइट्स किसके बारे में होती हैं, किसके ऊपर होती हैं, he said the normal holidays and food कौन सा खाना है, and then he said inheritance के ऊपर भी होती हैं बातें. So that was fun because I mean if you have so much laying around, सबको पता होना चाहिए कि किसको क्या मिल रहा है. Am I right or am I right? And then जब करण ने पूछा कि what would Sarah be up to if she doesn't answer your call, and Seth goes, she would be devotionally occupied. That was really fun because जो Sarah है, she goes to a lot of religious sites and shrines, so that was really funny. And एक किस्सा Seth ने सुनाया तैमूर को लेके कि Taimur asks me about God and about Jesus's crucifixion and why it happened and how he died. And वो कहता कि Kareena introduced him to Christianity, like, and I'm the one answering all the questions. So that was pretty fun. And जहाँ तक शर्मिला की बात है, like I said, उनके questions बहुत ही ज़्यादा interesting थे, और उनके answers भी अच्छे थे and quick थे. She wasn't sitting there thinking about it, hesitation कोई नहीं थी, so that was really nice. And actually पूरे episode में कहीं पे भी hesitation नहीं थी. Sharmila was talking, she was like letting it out, so that was really fun. There were no guards. जब करण ने पूछा उसको कि who would you want to play your biopic, तो शर्मिला ने कहा कि अगर आज की बात करो तो आलिया, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करो then Sara. I think that would be so beautiful for a granddaughter to play her grandma on screen. That would be really nice. Biggest achievement शर्मिला ने कहा है कि मैंने अपना professional and personal life balance किया है. जब करण ने पूछा when was the last time you reprimanded Saif, तो शर्मिला कहती grown-ups को कैसे reprimand करें, लेकिन हाँ quite often. So that was good. Saif was like, you just reprimanded me like a minute ago. And ये हम देख ही रहे थे when she was like, let me tell a story. I'm continuing the story. Let me say what I'm saying. ये पूरे episode में हो रहा था. जब करण ने पूछा कि what qualities do your kids have from your husband, the late Tiger, यहाँ पे शर्मिला ने कहा their sense of humor and also how well behaved they are in public. And I think that's so right क्योंकि हमने कभी भी सुना नहीं है, at least मैंने कभी नहीं सुना कि सोहा या सबा या Saif have misbehaved, have created a scene, have disrespected someone. मुझे तो कभी सुनाई नहीं दिया ये सब. जब करण ने पूछा what's something the actresses have today that you didn't in the past, तो शर्मिला ने कहा I wasn't lacking for freedom. I did whatever I wanted, however I wanted, whenever I wanted. लेकिन अगर envy करती हूँ तो वो ये है कि आज की actresses को roles बहुत different मिलते हैं. It's not just the tragedy queen. एंड यहाँ पे मैं थोड़ी सी शॉक्ड थी क्योंकि जब शर्मिला टैगोर जहन में आती है यू थिंक ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्थर बैक्ड रोल्स. उन्होंने तो खुद ही आराधना एंड अमर प्रेम की बात की थी एंड दोज मूवीज वर fabulous. Sharmila also described some of her co-stars. Rajesh Khanna की बात करें, oh my god, I loved Rajesh Khanna. Anyways, Rajesh Khanna की बात करें तो शर्मिला ने कहा always late. अमिताभ बच्चन की बात करें, so then she said on time. धर्मेंद्र की बात करें तो शर्मिला said lovely, lovely person. And then Shami Kapoor ki baat karen, then she said that, he took me by surprise. And as I'm saying these yesteryear actors' names, एक hilarious बात हुई थी जब सैफ की डेब्यू फिल्म नहीं रही लेकिन होनी थी काजोल के साथ. वहां पे शर्मिला कहती I was talking to Tanu and Tanu was so happy, I was so happy, and Saif was like, Tanu? Who is Tanu? And Karan's like, Tanuja. And he was like, oh, that was really fun. That tells you how like unbothered and unconcerned Saif is with everything. That was so hilarious. And ये भी मेरे लिए shocking था. At one point of time, Saif stayed with Gulzar. The Gulzar. बाहर जाके पार्टियां करता था, घर पे आया and वहाँ पे गुलजार साहब अपना रियाज कर रहे हैं. So that was a really fun story. And lastly, Sharmila ने ये भी कहा था कि she would love people to age gracefully, naturally. वो कहते हैं natural beauty ही best होती हैं. Don't, make yourself go through all of that artificiality.
एंड यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी कि किसी को क्या करना चाहिए, लेकिन आई डू टेंड टू एग्री कि नेचुरल ब्यूटी इज अमेजिंग एंड कुछ लोग थोड़ा कैरीड अवे हो जाते हैं फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ निप्स एंड टक्स दे progress and they turn into something that looks artificial. Okay, guys, that was the episode. I don't know how long I have been talking about it, लेकिन I just really like the nostalgia factor क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मेरे mom dad ने मुझे बहुत old and classic movies दिखाई थी growing up, तो यहाँ पे मैं भी बहुत excited थी Sharmila Tagore and Saif Ali Khan को देख के. I would have loved to hear more of Saif Ali Khan, but I really enjoyed their bond and their relationship. एंड दैट्स इट गाइस. आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको शर्मिला एंड सैफ का डुओ कैसा लगा, आपको ये सीजन कैसा लग रहा है, इज इट सैटिस्फैक्टरी और डू यू वांट मोर? एंड ऑल्सो यू नो व्हाट टू डू गाइस, like, share, comment and subscribe, and I'll see you next week with another review. Bye bye.